हेलो 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 हेलो। गुड आफ्टरनून बेटा। हाँ जी मैम, आ रही है आपकी आवाज। हेलो। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून मैम। यस, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून बेटा। हेलो। गुड आफ्टरनून मैम। आफ्टरनून मैम, गुड आफ्टरनून। यस, जिज्ञासा पुनीत। हेलो। यस मैम। यस मैम। वॉइस ऑडिबल है आप लोगों को? इट्स ऑडिबल? यस यस मैम। इट्स क्लियर पुनीत? यस मैम। यस मैम यस। थोड़ी सी वीक आ रही है। इट्स क्लियर ना? वॉइस इज क्लियर? यस मैम। ओके। योर टॉपिक इज, आपका जो टॉपिक है वो मैं स्टार्ट करवा रही हूँ, ठीक है? दिस इज द टॉपिक that multi-purpose projects and resettlement issues. What do you mean by the multi-purpose projects and resettlement issues? Multi-purpose projects का मीनिंग क्या होता है? जो भी डैम्स वगैरह कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं, that is known as the multi-purpose projects. That is known as the multi-purpose projects. Different dams is to be constructed, and a multi-purpose project is a large-scale hydro projects often included the dams for the water retention, canals for the irrigation, water processing, and the pipelines to supply water to the cities and the power generators. That is known as the multi-purpose projects. For example, the canals for the irrigation. Irrigation means होता है जो क्रॉप प्रोडक्शन के लिए जहाँ सिंचाई की जाती है, दैट इज नोन एज इरिगेशन. वाटर प्रोसेसिंग एंड पाइपलाइंस, जो भी पाइपलाइंस होती हैं, इट इज ऑल्सो to the multi-purpose projects to the supply water to the cities and power generation. That is known as the multi-purpose projects. Okay, projects which severe more than one purposes are called the multi-purpose projects. Projects generally, majority of the multi-purpose projects are the combination of irrigation and hydropower plants. ठीक है, जो इरिगेशन के लिए यूज किए जाते हैं एंड हाइड्रो पावर प्लांट्स के लिए यूज किए जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए यूज किए जाते हैं, दैट इज नोन एज द मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स. उसके बाद में this is the pictures of the multi-purpose projects. What are the advantages of the multi-purpose projects? Okay, these are the pictures of the multi-purpose projects. This is Sagar Dam. It is also the example of multi-purpose project. Nagal जो डैम है, it is also the example of multi-purpose projects. Different advantages is to be given for the multi-purpose projects. First one is multi-purpose projects reduces and amelgamation the seasonal flooding. जो भी seasonal flooding होती है उसे reduce करता है multi-purpose projects. Okay, the retained water, जो भी retained water होता है human consumption के लिए जो water होता है, it is also the main advantages of the multi-purpose projects. उसके बाद में next आता है, it can be used to generate electricity. जो multi-purpose projects है, it is helpful to generate the electricity in different hydropower plants. Next one is it can be used to improve. नेक्स्ट है जो लेक फिशर्स होते हैं वो भी इम्प्रूव होते हैं बिकॉज ऑफ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स. नेक्स्ट वन इज इट कैन इम्प्रूव. क्या इम्प्रूव करता है? ट्रांसपोर्टेशन एज ए पार्ट ऑफ कैनल सिस्टम. ट्रांसपोर्टेशन जो प्रोसेस होती है, ठीक है, इट कैन ऑल्सो बी इम्प्रूव्ड बाय द मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स. नेक्स्ट, व्हाट आर द disadvantages of the multi-purpose projects? Different disadvantages are there. First one is the displacement of the hundreds, thousands of, not millions of the people. Next one is it may damage or destroy riverways fishers. ठीक है, ये डैमेज कर देता है और डिस्ट्रॉय कर देता है जो फिशर्स जो होते हैं वो रिवर के ऊपर बेस्ड होते हैं. नेक्स्ट वन इट मे डैमेज और डिस्ट्रॉय बेस्ड फिशर. जो बेस्ड फिशर्स होते हैं उसे भी डैमेज कर देता है. नेक्स्ट वन इज इट्स क्रिएट टेंशन बिटवीन नेबरिंग कंट्रीज. जो नेबरिंग कंट्रीज होती हैं वो भी इससे टेंशन में आ जाती हैं बिकॉज ऑफ द मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स. मल्टीपर्पज जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके थ्रू जो नेबरिंग कंट्रीज होती हैं, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन की जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो भी इंक्रीज हो जाती हैं बिकॉज ऑफ द मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स. तो इट क्रिएट टेंशन बिटवीन द नेबरिंग कंट्रीज. इट मे डैमेज और डिस्ट्रॉय
बेस्ड फिशर्स, जो बेस्ड फिशर्स होते हैं उनके लिए भी एक डैमेज और डिस्ट्रॉय की प्रॉब्लम क्रिएट होती है बिकॉज ऑफ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स. Multi-purpose projects in India, different multi-purpose dams are in India. First one is the first multi-purpose projects in India was the Damodar Valley Corporation. फर्स्ट जो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स है वो है आपका दामोदर कॉर्पोरेशन. उसके बाद में आता है नेक्स्ट जो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है वो भाखरा जो है वहां पे है. मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स इंक्लूडिंग द लार्जेस्ट स्टेट ग्रेविटी डैम्स इन इंडिया. इट इज अ जॉइंट वेंचर. ये एक तरीके से जॉइंट वेंचर है बिटवीन पंजाब एंड हरियाणा एंड राजस्थान. ओके, तो दीज आर द मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स इन इंडिया. उसके बाद नेक्स्ट आता है नागार्जुना. नागार्जुना मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स, इट इज ऑल्सो इन इंडिया, वॉज एस्टेब्लिश इन, जो कि हमारा 1665 में एस्टेब्लिश किया गया था. Largest irrigation projects in India, it is the largest irrigation projects in India. Next one is, next जो multi-purpose projects है is a joint ventures between the आंध्र प्रदेश. आंध्र प्रदेश में एक joint venture है, it is based on the rivers, ठीक है, जो कि रिवर के ऊपर बेस्ड है. नेक्स्ट आता है आपका इंदिरा गांधी प्रोजेक्ट जो कि राजस्थान कैनल में है. इन दिस प्रोजेक्ट द वाटर ऑफ द रिवर, जो वाटर है रिवर का, इट इज बेस्ड ऑन द रावी, ठीक है, जो वाटर बेस्ड है, इट इज रिवर ऑन द रावी इज टर्म्ड टुवर्ड्स द रिवर्स, ठीक है. नेक्स्ट आता है इंदिरा गांधी प्रोजेक्ट्स के बाद है आपका जो एस्टेब्लिश हुआ था हरियाणा, पंजाब, हरियाणा एंड राजस्थान में. उसके बाद में आता है आपका नेक्स्ट मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स है जो कि हाइड्रल पावर प्रोजेक्ट्स है इन अ जॉइंट वेंचर्स बिटवीन द उत्तर प्रदेश एंड हिमाचल प्रदेश इन अ रिवर, ठीक है. नेक्स्ट आपका जो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था इन इंडिया कंट्री, हरियाणा हाइड्रल पावर प्रोजेक्ट्स, इट इज इन द रिवर इन महाराष्ट्र. ये जो महाराष्ट्र में रिवर है वहां पे एस्टेब्लिश किया गया था. दिस इज द पिक्चर. ये आपका जो पिक्चर है वो महाराष्ट्र की पिक्चर है, कान्या हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स. उसके बाद में आता है आपका सरस्वती हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स इज ऑन द सरस्वती रिवर. वो कहाँ पे है? सरस्वती रिवर में है. उसके बाद में आता है कोसी. कोसी मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट इज ऑन द रिवर कोसी, ठीक है. तो कोसी जो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है इट इज ऑन द रिवर कोसी, जो कि रिवर कोसी में है. इट इज द जॉइंट वेंचर बिटवीन इंडिया एंड नेपाल. इंडिया एंड नेपाल में ये एक तरीके से जॉइंट वेंचर है इन विच बिहार गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटेड ऑन द बिहाफ ऑफ द इंडिया, ठीक है. तो इंडिया और नेपाल के बीच में है ये जॉइंट वेंचर है जो कि कोसी मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स के नाम से है, इन विच बिहार गवर्नमेंट, ये यहाँ पे क्या है, जो बिहार की गवर्नमेंट है वो एडमिनिस्ट्रेट करती है ऑन द बिहाफ ऑफ इंडिया, इंडिया के बिहाफ पे. नेक्स्ट आता है आपका चैम्बल वैली मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स. इट इज अ जॉइंट वेंचर बिटवीन राजस्थान एंड मध्य प्रदेश के बीच में ऑन द रिवर चंबल. चंबल में रिवर्स पे है, इसे हम चंबल वैली मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स के नाम से जानते हैं. ये एक जॉइंट वेंचर है जो कि राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में है, जो कि चंबल रिवर है उसके ऊपर है. नेक्स्ट टॉपिक है आपका, फर्स्ट टॉपिक इट इज टू बी कंप्लीटेड. नेक्स्ट टॉपिक है आपका रीसेटलमेंट एंड रिहैबिलिटेशन ऑफ द पीपल. व्हाट डू यू मीन बाय द रीसेटलमेंट एंड रिहैबिलिटेशन ऑफ द पीपल? रीसेटलमेंट एंड रिहैबिलिटेशन का मीन्स होता है व्हेन द पीपल रीसेटल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. व्हेन द पीपल शिफ्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, दैट इज नोन एज द रीसेटलमेंट एंड रिहैबिलिटेशन प्रोसेस. People who forced to move out of their land due to both natural and man-made disasters, that is known as the resettlement process. Means people, जो लोग होते हैं उन्हें या तो forcefully लोगों को बोला जाता है कि you can move from one place to another place because of the government rules and regulation. Illegal अगर किसी के houses हैं या फिर गवर्नमेंट कुछ प्रोजेक्ट्स तैयार करती है, फॉर एग्जांपल डैम्स कंस्ट्रक्ट करती है, फॉर एग्जांपल रोड जो कंस्ट्रक्ट की जाती है, फॉर एग्जांपल डिफरेंट माइनिंग प्रोसेस होती है, उसके उस प्रॉब्लम से लोगों को बोला जाता है कि यू हैव टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. नेक्स्ट वन इज कि जितने भी आपके ट्रेन के जो ट्रैक्स होते हैं वो जब बनाए जाते हैं, when they are constructing, on that time the people's houses is to be break down, ठीक है. और उनको फोर्सफुली बोला जाता है you have to move
You have to break down your houses and you have to move from one place to another place. That is known as the resettlement and rehabilitation process. Okay. Because of some natural disasters, कुछ natural disasters होते हैं, उनकी वजह से भी लोग क्या करते हैं, from one place to another place resettle होते हैं. For example, natural disasters like earthquake. अर्थक्वेक इज ए नेचुरल डिजास्टर, उसकी वजह से भूकंप आने की वजह से सभी लोगों के घर टूट जाते हैं, या फिर साइक्लोन की वजह से सभी लोगों के घर टूट जाते हैं, या फिर सुनामी की वजह से सभी लोगों के घर टूट जाते हैं. तो बिकॉज ऑफ दीज नेचुरल डिजास्टर्स लाइक अर्थक्वेक, साइक्लोन, सुनामी etc. render thousands of people homeless and someone even force them to move and resettle in other areas. ठीक है, they have to move from one place to another places. Okay, for example मैंने अभी आपको बताया था साइक्लोन है, सुनामी है, नेचुरल डिजास्टर्स, अर्थक्वेक है. So the peoples, because of these natural disasters, the peoples are moved from one place to another place or resettle from one place to another place. Development projects like कंस्ट्रक्शन ऑफ द रोड्स जो कंस्ट्रक्ट की जाती हैं, या फिर डैम्स बनाए जाते हैं, या फिर कैनल्स बनाए जाते हैं, आर फ्लाई ओवर डिस्प्लेस्ड पीपल फ्रॉम देयर होम्स. That is known as the resettlement and rehabilitation process because of the man-made disasters and because of the natural process. Okay, next, all of us are aware of the recent nuclear leakage in the Japan, due to which millions of the peoples were forced to leave the areas from their safety. Okay, resettlement refers to the process of settling against in the new areas. Rehabilitation means restoration to the former states. Resettlement is a process of moving people to the different places to live because they are no longer allowed to stay in the areas where they have to move. That is known as the resettlement process. Next one is the reason for the displacement of the people. Why the people is to be displaced from one place to another place. The people is to be moved from one place to another place. That is the natural disasters like the earthquake, cyclone, tsunami, volcanic eruptions. These are the reasons for the displacement of the people from one place to another place. Next one is man-made disasters like इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स. जो मैन मेड डिजास्टर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल द इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स. फॉर एग्जांपल फर्स्ट वन इज भोपाल गैस न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स जो हुए थे. करंट डिजास्टर्स इन जापान के अंदर जो करंट डिजास्टर्स हुए थे, इन ऑयल स्पिल्स जो हुए थे, ठीक है, टॉक्सिक contaminations of the slide etc. are the reasons for the displacement of the people from one place to another place. Next one is in search of the better employment opportunities. जब लोग एक better employment opportunities के लिए they move from one place to another place. This is also the main reason of the resettlement process. Development projects like different development projects like first one is construction of the dams. The construction of the dams. Next is irrigation canals. Next one is reservoirs. It is also the main reasons of the resettlement of the people from one place to another place. First one is construction of dams. जब construct किए जाते हैं different dams को, irrigation process जब की जाती है, irrigation का meaning होता है जो सिंचाई की जाती है, उसके लिए भी the peoples are resettled from one place to another place. Next one is infrastructure projects like bridges, roads. It is the infrastructural process so that the people they move from one place to another place and resettle from one place to another place. Next one is transportation activities, different transportation activities. First one is like roads, highways, canals. It is to be constructed so that the people are resettled from one place to another place. Resettlement from one place to another place. Next आता है energy related projects like different plants, oil spoilage, mining pipelines like the RBI projects etc.
different agriculture projects are happen so that the people they move from one place to another place. Next one is the project related with the conservation of the wildlife like natural जो आपके डिफरेंट प्रोसेसेस होती हैं, फॉर एग्जांपल आपकी जो वाइल्ड लाइफ होती है, ठीक है, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स तैयार किए जाते हैं फॉर द डिफरेंट सेंचुरीज टू मैन्युफैक्चर द डिफरेंट सेंचुरीज बायोस्फीयर रिजर्व्स. It is also the process that is to be started for protection of the wild animals. Different national park is to be established for the development of the different projects so that the people they resettle from one place to another place. Next one is what do you mean by the resettlement issues. इतना आप लोगों को क्लियर हुआ है? It's clear बेटा. Next topic is resettlement issues. What do you mean by the resettlement issue? Why the peoples they move from one place to another place? Okay, so first one is little or no support. Because of the little or no support, the peoples are moved from one place to another place. Little or no support का meaning होता है जब when the peoples have no support or little support, they displace from one place to another place or resettle from one place to another place. Displacement mainly जो रूरल पीपल्स होते हैं या फिर जो फॉर एग्जांपल जो पीपल्स आदिवासी लोग जिन्हें बोला जाता है, दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. ठीक है. नेक्स्ट वन इज loss of livelihood. What do you mean by the loss of livelihood? Loss of livelihood means होता है when the people are displaced, not a simple incident. ठीक है, simple incident नहीं होता है उनके साथ में. For example, they move from one place to another place because of the loss of livelihood. Means उनकी सारी जो life होती है, they are destroying all his properties, all his occupation. So they move from one place to another place. Okay. First one is the occupation. They lose their occupation, even they lost their properties also in different natural disasters. Then the loss of livelihood. The people displaced from one place to another place because they lost their livelihood. Displacement is not a simple incident in the lives of the displacement peoples. They have to leave their ancestors' land, means they lost all his ancestors' land. Ancestors means जो होता है पूर्वज. पूर्वजों की जितनी भी उनके पास लैंड होता है, जो भी उनके पास जमीन होती है, they lost because of the natural disasters. So they move from one place to another place. Next one is lack of facilities. Because of the lack of facilities, the people displaced from one place to another place. When people are resettled in a new areas, the infrastructures and amenities are not provided in this area. ठीक है, तो उसमें क्या प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, लोगों को प्रॉपर सिस्टमैटिक वे से फैसिलिटीज नहीं में मिल पाती हैं. Lack of facilities are there, so the peoples displaced from one place to another place. This is also the main reasons of the displacement of the people from one place to another place. Next one is increase in stress. Increase in stress का मीनिंग क्या होता है? When the stress is increases means जब टेंशन इंक्रीज हो जाती है. ठीक है, जब आप एक किसी पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं, in that particular area you have so many tensions, so you want to leave this particular place to remove the tensions. Resettlement distributes the entire life of the people and are unable to bear the purpose losses and the life payment of compensation to the heart of the family. So different stress is to be increased when you have to shift it from one places to another place. Okay, this is also the main reasons of the displacement of the people from one place to another place. Next one is increase in health problem. Health problem भी increase हो जाती है जैसे you have shifted from one place to another place. Okay, तो जरूरी नहीं है कि वहां का वेदर आपको सूट करे, वहां की वेदर कंडीशंस आपको सूट करे. ठीक है, तो इंक्रीज इन ह्यूमन
problem or health problem it is to be increases because of the resettlement process. जैसे फॉर एग्जाम्पल आप दिल्ली एनसीआर के अंदर रहते हैं, वहां का वेदर आपको सूट करता है, वहां की टर्म्स एंड कंडीशंस आपको सूट करती हैं, और आपको बोल दिया जाए कि आप एमपी में जाकर के रहिए किसी भी एरिया के अंदर, देन वहां की जो वेदर कंडीशंस हैं उससे क्या है, आपको प्रॉब्लम इंक्रीज होने लगती है, उससे आपको हेल्थ प्रॉब्लम इंक्रीज होने लगती है बिकॉज ऑफ द climatic problem, because of the weather problem. Okay, increase in health problem. This is also the main reason of the displacement of the people from one place to another place. Secondary displacement, for example, secondary displacement में आता है occupational groups. For example, आपका एक particular occupation है, ठीक है, और उस occupation को उसमें कुछ growth and development के लिए you have to move from one place to another place. So this is also the main reason of the displacement of the people from one place to another place. This is the secondary displacement, occupational growth. Okay, जैसे for example आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, ठीक है, अगर आप फरीदाबाद में रहते हैं तो आप दिल्ली जाएंगे, डेली अप डाउन करेंगे, ठीक है। इन रूरल एरियाज, अगर आप रूरल एरियाज की बात करते हैं तो इन रूरल एरियाज में क्या होता है, ऑक्यूपेशनल अपॉर्चुनिटी इज नॉट गुड एज कंपेयर टू द अर्बन एरियाज. सो द सेकेंडरी डिस्प्लेसमेंट इज द ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स. Next one is the loss of identity. When you have to move from one place to another place, you have to lose your identity. फॉर एग्जाम्पल अगर आप कहीं पे भी बहुत दिनों से रहते हैं, 4 to 5 years आपको वहां हो गए हैं रहते हुए, उसके बाद में आप कहीं पे भी शिफ्ट होते हैं, देन यू हैव टू मेक योर न्यू आइडेंटिटी. ओके, तो आपकी जो आइडेंटिटी होगी उन लोगों को नहीं पता होगी, तो यू हैव टू मेक योर न्यू आइडेंटिटी इन अ न्यू एरियाज. ठीक है, तो यू हैव टू लॉस्ट योर प्रीवियस आईडी. ठीक है, तो प्रीवियस जो आईडी होती है यू हैव टू लॉस्ट. जैसे आप शिफ्ट करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. ब्रेकअप ऑफ द फैमिलीज एंड कम्युनिटीज आर द इम्पोर्टेंट सोशल इश्यूज ऑफ द डिस्प्लेसमेंट. नेक्स्ट वन इज इंटर कम्युनिटीज जो मैरिज इट इज टू बी क्रिएटेड, कल्चरल फंक्शंस. उसके बाद में आता है रीसेटलमेंट, इंक्रीज द पॉवर्टी ऑफ द रीसेटलमेंट प्रोसेस इज ऑल्सो इंक्रीजेस द पॉवर्टी. उसके बाद लॉस ऑफ द लैंड. Just after that, the loss of the identity of the individual and the loss of the connections between the people and their environment. Next one is the land laws do not pay attention to the ideas of communicational ownership. Next one is the people are not familiar with the market rates. जो लोग होते हैं they are not familiar about the market rates. For example, urban जो peoples होते हैं they know the market rates easily as compared to the rural peoples. Okay, तो जब रूरल एरियाज के जो लोग होते हैं, विलेज एरियाज के जो लोग होते हैं, जब वो अर्बन की तरफ मूव करते हैं तो दे डोंट नो द मार्केटिंग पॉलिसीज एंड कमोडिटीज एंड पॉलिसीज, द मार्केट ट्रेंड्स. So they have to move from one place to another place because of these some reasons. Next one is the objectives of the rehabilitation. Rehabilitation के कुछ objectives हैं. First one is they should be provided means to develop their own traditions. Okay, objectives of resettlement. First one is they should be provided means to develop their own traditions, arts and culture in everywhere. Next one is villagers should be given the option of shifting out with their others to leave them a community based life. This is also the main objectives of the resettlement process and rehabilitation process. Next one is removal of poverty should be the one main objective of the rehabilitation process. Next, the people displaced should get an appropriation shares in the fruits of the developments. I would be say that the really a good movement of the ISCs. Next, the displacement people should be given employment opportunities. When the peoples they displace from one place to another place, they get the better employment opportunities in different areas. Next is the resettlement should be in the neighborhood of their own environment. Resettlement process then should be in a neighborhood of their own environment.
नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज इफ रीसेटलमेंट इज नॉट पॉसिबल, रीसेटलमेंट पॉसिबल नहीं होता है इन द नेबरिंग एरियाज, priority should be given to the development of the irrigation facilities and the supply of the basic agriculture. For example, the drinking water, wells. मैंने अभी आपको बताया जैसे फॉर एग्जांपल वाटर, अगर इरिगेशन के लिए फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है, मींस वाटर की प्रॉब्लम है, वाटर का शॉर्टेज है, तो सबसे पहले यू हैव टू use the water in a drinking purpose. Okay, just after that for the animals also, drinking of water for the animals, for the drinking water for the human beings, for the children's also. Just after that we have to use that water for the irrigation if you have a lots of water opportunities. Next one is villagers should be taken into confidence. जो विलेजर्स होते हैं वो कॉन्फिडेंस में होने चाहिए एट एवरी स्टेजेस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट एंड दे शुड बी एजुकेटेड थ्रू पब्लिक मीटिंग डिस्कशन अबाउट द legalities of the land acquisition. Next one is the example of the resettlement and the rehabilitation of the people. Okay, different आपको examples दिए हुए हैं for the resettlement and the rehabilitation of the people, why they move from one place to another place, and what are the examples of the resettlement of the people from one place to another place. First one is displacement due to dams. ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्या है आपका, डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू डैम्स, मींस जब डैम्स कंस्ट्रक्ट होते हैं तो उससे लोग डिस्प्लेस होते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. First one is displacement of the people because of the dam construction. India has been constructed dams and other hydropower projects. In the last 50 years, में 20 billion people have to be affected the construction of such projects. Okay, so this is the first point, that is displacement due to the dams. Next point is displacement due to the mining process. Why the people they are displaced from mining process due to the possibilities of the accidents. लोग mining process से कैसे displaced हुए हैं due to the possibilities of the accidents, and people have to displace in underground and mining areas. Mining takes up several hectares of the land. Thousands of the people have to be affected. They displaced from one place to another place, and some 3 lakhs people were to be shifted, and it becomes problem to find an alternative sites. Okay, the main second example of the displacement due to the mining process. Next one is displacement in Japan due to the nuclear crisis. Nuclear crisis की वजह से लोग displace हुए हैं from one place to another place. There was a current nuclear crisis in the Japan where there was an explosion in the 3 of the major cities due to the tsunami. तो tsunami की वजह से क्या हुआ था, displacement of the people from one place to another place. Next one is, this is the example of the displacement of the people or resettlement of the people because of these natural disasters. Now your topic is completed. Yes, any problem, any doubt, बताइए जरा मुझे. Any problem? No, Any ma'am. doubt? Yes, Mansi. Yes, Mansi. कोमल. मैम मानसी तो हमारी क्लास में ही सॉरी नहीं सॉरी है. सॉरी, बाय मिस्टेक बोल दिया. कोमल. 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 पुनीत. यस मैम. पुनीत, प्लीज आप लोग सभी स्टूडेंट्स अपने आप को अनम्यूट करिए. अनम्यूट योरसेल्फ प्लीज. जिज्ञासा, कोमल, मुस्कान कालरा, मुस्कान कौशिक, नैना ग्रोवर, प्रीतम, प्रीतम बैसला. बेटा आपको एक इन्फॉर्मेशन देनी है, प्लीज आप लोग अपनी फीस डिपॉजिट कर दीजिए. आप लोग फीस डिपॉजिट नहीं करेंगे तो आपका रिजल्ट नहीं आएगा. आपको कितनी बार मैं बोल चुकी हूँ, लेकिन आप इस चीज को सीरियस नहीं ले रहे हैं. ठीक है, प्लीज सबमिट योर फीस एज अर्लियर एज पॉसिबल.
अदरवाइज आप लोग का रिजल्ट, आप लोग खुद इस चीज को सफर करेंगे। आप लोगों की सारी क्लासेस हो रही हैं, ठीक है, सारी प्रोसेसिंग हो रही है, फिर भी आप फीस के लिए इतना डिले कर रहे हैं। प्लीज सबमिट योर फीस। ओके, हेलो। यस मैम। जिज्ञासा, आदित्य, मुस्कान कालरा, मुस्कान कौशिक, नैना, प्रीतम, पारस भाटिया, प्लीज डिपॉजिट योर फीस एज अर्लियर एज पॉसिबल। ओके, अदरवाइज आप ही लोग इस चीज को सफर करेंगे। आई एम नॉट सफरिंग दैट प्रॉब्लम। ओके, आप लोग ही सफर करेंगे प्रॉब्लम्स को, तो प्लीज आप लोग फीस डिपॉजिट कर दीजिए। मैंने बहुत बार आप लोगों को बोल दिया है, लेकिन आपको मेरी बात समझ नहीं आ रही है। कितनी बार आप लोगों के पास नोटिस जा चुके हैं, आप लोग की सारी क्लासेस हो रही हैं, सब कुछ कॉलेज आपके लिए कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी आप फीस डिपॉजिट नहीं कर रहे हैं। मैं लास्ट बार आपको बोल रही हूँ कि आप प्लीज अपनी फीस को जैसे जल्दी हो सके उतना जल्दी आप डिपॉजिट कर दीजिए। ओके, नाउ एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम? जो भी मैंने आपको टॉपिक करवाया है उसमें एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट? नो मैम। नेक्स्ट टॉपिक आई विल स्टार्ट ऑन टुमारो। एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट? नो मैम। प्लस रीसेटलमेंट प्रोजेक्ट्स एंड मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स एंड रीसेटलमेंट इश्यूज, ये मैंने कंप्लीट करवा दिया है आपको। सबसे पहले मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय द मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स? मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स इज अ लार्ज स्केल hydro projects, often included dams, water retentions, canals for the irrigation, water processing, and the pipeline to supply water to the cities and power generations. These are the different pictures for the multi-purpose projects. Next one is advantages of the multi-purpose projects. I already explained you. Next, what are the disadvantages of the multi-purpose projects? Multi-purpose projects in India. Different multi-purpose projects in India are there. This is the Damodar Valley projects. Next one is, this is the next hydropower plants in the Maharashtra. Kanya hydropower plants in Maharashtra. Resettlement and rehabilitation issues. What are the reasons of the resettlement and rehabilitation issues? Next one is these resettlement issues. Little or no support of the people's, lack of the facilities, increase in stress. This is also the main examples of the resettlement process. Increase in health problem. Secondary displacement of the people, why the peoples are displaced from one place to another place. Objectives of the resettlement and rehabilitation. What are the objectives? These are some of the objectives I already explained you. Next example of resettlement and rehabilitation process. First one is displacement due to the dams. Next आता है आपका displacement due to the mining process. Next आता है आपका displacement in Japan due to the nuclear crisis. So these are some of the examples of the resettlement and rehabilitation of the people from one place to another place. Now your class is over. Any doubt, any problem? I will start your new topic on tomorrow. Okay? Yes, beta. Now your class is over.